Hello students, welcome to my channel, and in last video we have discussed how the matter exists in a form of mixture or a pure substance. So in pure substance we have discussed element and compound. We have discussed element and what are the compounds. Now the topic is, if we study about the mixtures, so why would you call it a mixture? So question arises, are particles uniform throughout? आपने जो भी मिक्सचर लिया है उसमें जितने पार्टिकल हैं वो पूरे के पूरे पार्टिकल इस पूरे मिक्सचर में कॉमन है? क्या बोल रहे हैं? यूनिफॉर्म मतलब सेम हो. अगर सेम एक जैसे हो जाएंगे, सारे पार्टिकल्स एक जैसे हो जाएंगे तो क्या बोल देंगे? यूनिफॉर्म बोल देंगे. अगर एक जैसे नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म है. यानी एक टर्म यहाँ पे क्लियर होता है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस. तो टॉपिक है, are particles uniform throughout in mixture? Okay, let's start with the animation. Solution. Then it is a homogeneous mixture. For example, sugar solution is a homogeneous mixture because sugar particles get distributed uniformly throughout the solution. If the particles are not distributed uniformly throughout the solution, then it is a heterogeneous mixture. For example, सीधी बात है, अगर किसी सोल्यूशन में पूरा सोल्यूशन आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, यानी एकदम क्लियर सोल्यूशन दिख रहा है, उसमें किसी तरह का अलग से प्रेसिपिटेट या अलग से किसी तरह का क्रिस्टल नहीं दिख रहा, तो क्या बोलेंगे? वो होमोजेनियस, यानी कंप्लीटली मिक्स्ड मिक्सचर हुआ, कंप्लीटली मिसिबल हुआ. अगर आपको थोड़े से क्रिस्टल दिख रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं अलग से, तो क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस. बहुत आसान है, इसमें हम डिस्कस करते हैं. sand dissolved in water Sand is a आपको दिखाई heterogeneous पड़ेगी. mixture because sand particles are not uniformly distributed throughout the solution. सैंड आपको नीचे दिख रही है. A mixture can be separated into its constituents by physical methods. For example, a mixture consisting of iron filings and sulfur powder can be separated by using a magnet, Magnet. that is, by magnetic separation. As we learnt, matter is anything that has mass and occupies space. Every substance is made of matter and has unique properties. We can classify properties as physical and chemical properties. Let's learn about them. We have with us a rubber ball. Let's see how we can describe it. By looking at and feeling the ball, we can see that the ball is a solid. It is round and yellow in color. It smells like rubber and it bounces. Now, let's observe this block of sulfur. We can say that sulfur is a yellow solid crystal and has a strong odor. What we saw are the physical properties of a rubber ball and sulfur. These properties can be easily seen or felt. Thus, we can say that फिजिकल प्रॉपर्टी सिंपली ये हुआ जिसको हम खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जस्ट बाय वॉचिंग इट. ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी सिंपली ये हुआ, जैसे आपने कोई बॉल पकड़ी हाथ में तो आप उसको फील कर सकते हो. आपने कोई सल्फर क्रिस्टल अपने हाथ से पकड़ा तो उसको आप फील कर सकते हो. उस और फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या देखते हैं? उसका स्टेट कैसा है, मतलब किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, शेप कैसा है भी आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, कलर भी आपको ऑब्जर्व हो सकता है, ओडर यानी स्मेल भी आप बता सकते हो. लाइक तो ये सब चीज़ें ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं. लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप जस्ट बाई वॉचिंग यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात डिफरेंट करेंगे. physical properties are those properties that can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance. Color, length, mass, area, texture, सब फिजिकल प्रॉपर्टी. elasticity, odor, melting point, and boiling point are examples of physical properties. Note down physical properties. These are all the physical properties. Color, length, mass, area, texture. टेक्सचर कैसा है किसी चीज़ का, इलास्टिक है या नहीं है. ओडर मतलब स्मेल होता है, ओडर मतलब स्मेल, कैसा स्मेल हो रहा है.
मेल्टिंग पॉइंट, कोई भी सॉलिड चीज़ है कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, कोई लिक्विड चीज़ हुआ, कोई लिक्विड सब्सटेंस हुआ, मिक्सचर हुआ, वो कितने टेम्परेचर बॉयल हुआ, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। ये सब क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में काउंट किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल्स के लिए। Physical properties help us describe a substance. However, the description is not sufficient to identify a substance. For example, saying that sulfur is something that is yellow and solid and has a strong odor is not enough, because there can be many solids that may have the same properties, including a yellow rubber ball. Hence, it is necessary to also know the chemical properties of a substance to identify it correctly. The chemical properties of a substance can be observed when a substance undergoes a chemical change. Flammability, reactivity to an acid, and reactivity to water are examples of chemical properties. करेक्ट। कोई चीज़ बर्न हो रही है, राइट। सपोज करो आपने मैग्नीशियम को बर्न किया, तो मैग्नीशियम बर्न होने के बाद कुछ और बना देगा, क्योंकि मैग्नीशियम का सिंबल आप देते हो Mg और बर्न कर रहे हो तो उसको सिंबलाइज करोगे +O2, क्योंकि कोई भी बर्निंग पॉसिबल है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली, राइट। सो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बर्न हुआ तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका स्टेट चेंज हो गया, अभी जो सॉलिड फॉर्म में था, ऑफ कोर्स ये भी सॉलिड है, लेकिन ये पाउडर ही, अब ये वाइट पाउडर हो जाता है, राइट। तो क्या हुआ, ये केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि पहले Mg था अकेला, अभी मैग्नीशियम से अटैच्ड हो गया, बॉन्डेड हो गया। तो केमिकली जो चीज़ बॉन्डेड हो जाए, उसका अपना खुद का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ख़त्म होके एक नई प्रॉपर्टी दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, बन जाए, तो क्या बोल देते हैं, वो केमिकली चेंज हो गया। तो ये प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी। For example, if we burn sulfur, सपोज को it सल्फर है, produces a blue clear flame. Thus, the blue clear flame is a result of chemical property. When performing a chemical experiment, scientists study the properties of substances. This involves measuring the quantitative properties of a substance. A quantitative measurement comprises a numerical value and a unit. For example, मेजरमेंट। this block of sulfur weighs 200 grams. Here, 200 is the number and grams is the unit. The units of measurement are derived from two systems, the English system and the metric system. नो डाउट। The English system included units such as yard, foot, inches, miles, and gallons, to name a few. However, there was no uniformity in the conversion of one unit to another. In 1791, the French Academy of Science introduced the metric system. Under the metric system, the units of physical quantities relate to each other as multiples of power of 10. For example, 1 kilometer equals 10 to the power of 3 meters. इजी था जो इंग्लिश सिस्टम बनाया गया था। इंग्लिश सिस्टम में क्या था कि अगर एक यूनिट आपने लिखी है तो दूसरी यूनिट से मैच नहीं हो पाता। जैसे अभी हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, राइट। अब वहाँ पर 1 यार्ड एग्जैक्टली हाउ मेनी माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका एग्जैक्ट नोटिफिकेशन नहीं था कि आप 1 यार्ड में 1 माइल कितना काउंट कर सकते हो। वो इंटर कन्वर्टिबल नहीं था प्रॉपरली, क्योंकि वो एग्जैक्ट काउंट नहीं था। लेकिन जो मैट्रिक सिस्टम बाद में बनाया गया, उसमें क्या था, आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्जन्स प्रॉपरली कर सकते हो, तो उसमें एग्जैक्ट काउंट थे, राइट। तो किस में कर दिया, मल्टीपल ऑफ टेंस में। ओके। This system was found to be convenient and hence was used worldwide. चेंज कर सकते हैं। In 1960, the metric system was improved at the General Conference of Weights and Measures to create a new system called the International System of Units, or SI, SI सिस्टम से अब हम which बात is करेंगे। short for System International
in French. The SI unit pertains to 7 fundamental scientific quantities. Note down the They SI are units. length, measured as meter, SI units हैं, लेंथ के mass लिए मीटर measured है, as SI kilogram, यूनिट. time measured as second, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि टाइम की SI यूनिट क्या होगी तो सेकंड्स में होगी. आप मिनट, आवर, 24 आवर नहीं बोलोगे, राइट. SI यूनिट करंट के लिए आपके सामने है. करंट के लिए क्या बोलेंगे? एम्पियर. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर के लिए हम जब भी बात करेंगे तो केल्विन में बात करें, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, याद रखेंगे. डिग्री सेंटीग्रेड SI यूनिट में नहीं होता है, वो केल्विन किया जाता है. अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिकली देखा जाएगा तो उसको मोल में याद रखेंगे, राइट. और मोल क्या होगा? ये बहुत बड़ा टॉपिक, इसके हम डिस्कशन करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स जो कि अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होगा. ओके. एक आया टर्म ल्यूमिनोसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इसको हमने बात किया कैंडेला. कैंडेला यूनिट है. तो ये कुछ प्रॉपर हमारे पास 7 इंटरनेशनल जो SI यूनिट्स के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया अकॉर्डिंग विद द यूनिट्स.